द वर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री टू बी born। सबसे खराब टाइम जब आप इस दुनिया पे आ सकते थे, लेकिन आप बच गए। मुझे नहीं पता कौन सा होने वाला है, ये वीडियो का टाइटल है, ठीक है। वीडियो होने वाले इंग्लिश में। तो अगर आपको यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप देख लो बड़े भाई, कुछ देख लो, कुछ दया हो जाएगी मुझ पे, थोड़ी सी तो देख लो, मतलब पूरी देख लो यार। तो मुझे लगता है कि सबसे खराब टाइम हो सकता है, कुछ दिक्कत होगी मे बी। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है, प्री हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री में भी क्या बोलते हैं पता नहीं, नियोलिथिक, मिजोलिथिक, विच वाज लाइक मिलियन ऑफ इयर्स अगो। तो मे बी आइसे जो समथिंग कुछ दिक्कत आ सकती है, मुझे नहीं पता, लेट्स सी कि क्या दिक्कत थी। एंड या लेट्स कंटिन्यू गाइस, लेट्स सी कि क्या दिक्कत थी। ओके। This is you. There's नहीं, मैं यहाँ हूँ, वो मैं नहीं। आई मीन, ये क्या है, मोगली और समथिंग? मोगली है क्या? your dad, अच्छा। his dad, and his. या Keep going. Soon you'll fly past powdered wigs, chainmail, mammoths, and eventually stumble upon a guy squatting in the dirt, chewing on a beetle, and trying not to die before या sundown. That guy? That's your ancestor. ये है हमारा एंसेस्टर, सर पे हड्डी है। नहीं, सबके सर पे हड्डी क्यों है बड़े भाई, क्या दिक्कत है? और इसके यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, इसकी बॉडी है। वेट 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 यार, यहाँ पे इसकी बॉडी है, और ये बुढ़े अंकल की बॉडी नहीं है, इसकी भी बॉडी नहीं है। लेट्स इग्नोर। He has no name, नो no नेम, shoes, नो। and no idea that you, a distant descendant with a snack addiction यूट्यूब पे वीडियो शूट कर रहा है, नहीं। and a mild caffeine dependency, even exist. But here's the thing, if that guy, or any one of the thousands of people in your ancestral chain, अच्छा। had tripped at the wrong moment, Oh, I wonder what killed. अरे कौन सी मूवी थी? ओके लेट्स इग्नोर। gotten द फाइनल डेस्टिनेशन। eaten by something toothy, Hell no. or just failed to reproduce, you wouldn't be here. ओके ओके ओके, क्या? बट ही इज मेल भाई, मेल ने कैसे रिप्रोड्यूस किया? ओके लेट्स कंटिन्यू यार इस You exist because 1,000 people before you didn't die when they should have. मुझे वो याद आया, समय रहना वाला, ठीक है। कितनी सही ऑर्डर में हुआ थी, चीजें हुई थी। दैट्स व्हाई वी एग्जिस्ट टुडे। अगर चेन में एक भी दिक्कत आती तो हम एग्जिस्ट ना करते। डोमिनो इफेक्ट, राइट? You're not lucky, you're the byproduct of violent coincidence and stubborn biology. Daddy? So let's take a look at how close you came over and over again to never being born at all. ओके। We're going to rank 5 of the deadliest periods in human history, from bad but survivable to you might as well start writing your will at birth. Let's get right into it. Number 5, Ice Age. Around 20,000 years ago, या मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, आइस एज 20,000 years ago। ओके दैट्स काफी पुराना है, बट स्टिल during यंग। the last glacial maximum, Earth wasn't exactly cozy. Massive ice sheets, up to 2 miles thick, smothered huge chunks of North America, Europe, and Asia. Average global temperatures dropped by about 10 degrees Fahrenheit, 6 degrees Celsius, एवरेज टेम्परेचर, दैट्स turning most of the planet into a frozen wasteland where food was a distant rumor. If you were alive back then, your daily routine involved not dying of hypothermia, hunting woolly mammoths the size of school buses, and occasionally running away from creatures like the cave lion, Panthera spelaea, one of the largest wild cats in history. आई मीन उस टाइम पे आइस एज में दिक्कत क्या हो सकती थी? मे बी एग्रीकल्चर में, वही होगी ना, बिकॉज एवरीवेयर वहाँ पे आइस है। कैसे करोगे कल्टीवेशन? नहीं पॉसिबल। तो फूड का सोर्स एक ही है, एंड दैट इज एनिमल्स, जिसमें हम सबसे वीक है। बाय अगर कंपेयर करें अदर एनिमल से, हम वी आर द वीकेस्ट एनिमल। आई मीन वन ऑफ द, मे बी आई डोंट नो, वन ऑफ द वीकेस्ट और वीकेस्ट, but because we are intelligent and we stay together, that's why we are alive today, right?
Let's continue. Your house? Probably a mammoth bone hut or a cave shared with 40 of your least favorite relatives. Your clothing? Animal hides stitched together with bone needles. Want dinner? Good luck. You're armed with a sharpened stick, and your target weighs 6 tons and is actively trying to kill you. And if starvation didn't get you, a simple infected cut probably would. There were no antibiotics, no No, nothing. vaccines, and no emergency rooms, just a lot. उस टाइम पे कुछ नहीं था बड़े भाई, अगर आप लग भी जाती तो इन्फेक्शन से मरते, राइट? अगर लेट सपोज कि कुछ हो भी सकता था कि कुछ टाके लगा दे या ऐसा कुछ भी मे बी होता, फिर भी एनेस्थेसिया नहीं था। अगर एनेस्थेसिया नहीं था, वेरी पेनफुल। आई गेस कितने 500 years ago, मे बी 200, आई डोंट नो, पहले नहीं था ना एनेस्थेसिया, राइट? तो इट मस्ट बी वेरी पेनफुल। अभी हम वी हैव एसी, वी हैव एवरीथिंग, हमारे पैरों में शूज है, उस टाइम पे इसके पास मे बी इसके पास तो मे बी शूज भी नहीं थे। वी आर सो प्रिविलेज्ड कि हम इस टाइम पे हैं, बट इस टाइम के भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें पता है कि आई डोंट नो, इंटरनेट डिस्ट्रैक्शन, ये काफी चीजें। लेट्स कंटिन्यू। Lot of home remedies involving chewing random plants and hoping for the best. Despite all this, Homo sapiens adapted. वेट, इनको कैसे पता चला होगा कि इस पेड़ के पत्तियों को खाने से आपको ये बीमारी या इन्फेक्शन या जो भी प्रॉब्लम है बॉडी में बायोलॉजिकली वो ठीक हो जाएगी? आई मीन कैसे? किसी ने खाई होगी, किसी को पता चला होगा, कुछ तो हुआ होगा ना। व्हाट एन एक्सीडेंट, राइट? लेट्स इमेजिन कि खाया और ऊपर से मर गया। ये तो डबल प्रॉब्लम। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Inventing tools, mastering fire, and even creating early art, like the cave paintings at Lascaux. Number 4, the dawn of agriculture. Somewhere around 10,000 years ago, या humans had a brilliant idea. Bro, What's wrong, bro? I can't chase one more mammoth. My legs hurt. Bro, you don't even have legs. Come on, man. We're only 400 miles What away if- from breakfast. Hear me out. We make food come to us. How? We stay in Oh. one place, grow stuff, build. I don't know. Okay. Welcome to the dawn of agriculture, also known अगर पहले देखो, आई मीन काफी इयर्स अगो, लाइक नॉट मिलियंस बट फ्यू सेंचुरीज अगो, इवन फ्यू थाउजेंड इयर्स अगो, लाइफ काफी माइनक्राफ्ट जैसी थी। अगर आपको पता है वीडियो गेम माइनक्राफ्ट, तो आपको पता होगा कि यू हैव टू डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। खुद से लकड़ियां काटनी है, घर बनाना है, फूड बनाना है, आई मीन हंट करना है, एवरीथिंग। लाइफ वाज टफ। as the कंटिन्यू। moment when humanity accidentally made life way harder. Early farmers swapped the nomadic, hunting lifestyle for settling down in permanent villages, planting crops like wheat, barley, and lentils. Sounds smart, right? Well, it was, except for the part where it unleashed a buffet of new problems. Living close together meant diseases could now spread like wildfire. Your diet? Way worse. Less protein, more vitamin deficiencies, and your teeth basically rotted out of your face. And don't even get me started on crop failure. One bad drought, one swarm of locusts, one random flood, and your entire village starved to death while glaring at the sky. Archaeologists have even found ancient skeletons showing signs of malnutrition, anemia, and horrifying dental disasters. Number 3, the Mongol invasions. If you were alive in the 13th century and saw a अच्छा, cloud of dust on the horizon, you had about 3 minutes to panic before your city got turned into a parking lot. Led by Genghis Khan, a man आई मीन ही वाज फ्रॉम मंगोलिया, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस टाइम पे क्या था मंगोलिया, और जहां से भी गेंगिस खान या जो भी था, किस लेवल का उसका डोमिनेंस था। एंड अभी देखो उस कंट्री को, मंगोलिया छोटा सा चाइना के ऊपर, कुछ लैंड पे तो चाइना ने कैप्चर किया है इलीगली, लीगली, आई डोंट नो। तो एवरीथिंग इज टेम्पररी अगर देखे तो। अभी यूनाइटेड स्टेट्स है सुपर पावर, पहले ब्रिटेन था, उसके पहले में भी कुछ तो रहा होगा ना, रोम, चाइना, इंडिया, वॉटेवर।
Everything is temporary, right? Let's Men who continue. treated mercy like a myth. The Mongols carved out the largest land empire in human history, stretching from China to Eastern Europe. Their strategy? Show up fast, hit hard, and leave absolutely या स्पेशली इस टाइम पे जहाँ पे काफी मोनार्की थी, राजा एंड अगर हम 500 साल या 1000 साल पहले भी होते तो काफी वॉर्स होती थी। अगर आई मीन यू इमेजिन तुम उस टाइम पे एक सोल्जर हो या क्या जो भी हो, ठीक है, राजा के लिए, और तुम तलवार से लड़ रहे हो, ऐसे ऐसे तुम तलवार तुम्हें कहीं भी लग सकती है, कितना पेन होगा। I mean, अभी तो फिर भी गन है, ठीक है, गन में तो उतना तुम्हारी बॉडी पूरी कट रही है। उस टाइम पे अगर कोई इन्वेजन करेगा कोई दूसरा राजा, ठीक है, तो भी लाइक गेंगिस खान या जो भी नाम है इसका, ही इज गोइंग टू किल पीपल सिविलियंस पे। उस टाइम पे तो कुछ नहीं था ना, लाइक सिविल राइट्स और एवरीथिंग। यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं था। यूनाइटेड नेशंस वैसे भी अभी कुछ नहीं कर रही, बट नॉर्मल लोग भी सेफ नहीं थे। वो तो अभी भी कई जगह पे नहीं है, बट लेट्स कंटिन्यू। आई मीन या ये जो टाइम था गेंगिस खान का, इट वाज वेरी, जो सरवाइव कर गए, ओके। nothing standing. Entire cities were wiped off the map, populations slaughtered, and survivors, if there were any, were sometimes used as human shields for the next battle. Mongol horse archers could hit you from 300 yards away while riding at full gallop, basically inventing mobile warfare centuries before tanks were even a thing. या Historians estimate the Mongol invasions killed around 10% of the world's population. At a time 10%। बट मोस्टली उसने इन्वेजन कहाँ पे किया होगा? सेंट्रल एशिया, राइट, मिडल ईस्ट, पता नहीं वहां पे पहुंचा था या नहीं, बट इंडिया तक तो नहीं पहुंचा था ड्यू टू सम रीजंस, ओके। एंड चाइना वाला रीजन आई डोंट नो उसने लिया होगा, रशियन थोड़ा मे बी। उतने एरिया में उसने 10 मिलियन और ऑलमोस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन उसने मार दी। इट वाज वेरी व्हाट टू से, when the world population was already tiny. Number 2. The Black ब्लैक Death. डेथ। In 1347, Europe got an unexpected package from Central Asia, courtesy of some highly motivated fleas. And things went downhill fast. The Black Death, or bubonic plague, tore through towns and cities like a biological wildfire, caused प्लेग इंडिया तक नहीं आया था, राइट? क्योंकि काफी मैंने सुना नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, ये मोस्टली यूरोप में था, राइट? by the bacterium Yersinia pestis, it traveled on rats, fleas, and humans who had absolutely no concept of personal hygiene. Once it hit, survival became a lottery. You could catch it from a handshake, a shared cup, or just by breathing the same medieval air as an infected guy. Symptoms included giant swollen lymph nodes, fever, vomiting blood, and, spoiler alert, death, usually within days. It's estimated that somewhere between 30% to 60% of Europe's population was wiped out in just a few years. Entire villages were abandoned, economies collapsed, and doctors walked around wearing creepy bird masks. वेट अ मिनट, कोविड ज्यादा डेडली था या फिर प्लेग? मुझे नहीं पता, ओके, आई एम जस्ट आस्किंग। अगर कोई देख रहा है और कमेंट करना चाहे तो कर सकता है। Filled with flowers because apparently vibe checking the plague was peak medieval science. Number 1. The Toba supervolcano eruption. Eruption. Around 74,000 years ago, the Toba supervolcano दैट्स वे बिग। exploded and nearly deleted humanity from existence. When Toba erupted, it launched over 670 cubic miles of ash and debris into the sky, enough material to cover the entire United States. The eruption triggered a volcanic winter so devastating that sunlight was blocked for an estimated 6 to 10 years. Global temperatures crashed by up to 27 degrees Fahrenheit, 15 degrees Celsius. Plants withered, animals starved, and ecosystems collapsed worldwide. For early humans, already struggling just to find enough calories not to die every day, it was catastrophic. Food supplies vanished. Entire landscapes turned to frozen deserts. Rivers dried up. Forests became graveyards. It's estimated that the total human population shrank to fewer than 3,000 individuals. 3000 वहां से कम बैक हुआ है बड़े भाई। A genetic That's bottleneck so tight that every person alive today likely descends from that tiny handful of survivors. No crops, no animals, no sunlight,
No second chances. Imagine spending your entire life in darkness, freezing, starving, with the constant fear that today might simply be the last day anyone sees the sun. And yet, somehow, against Somehow. all odds, a few stubborn, desperate humans manage to endure. You exist because they didn't give up when everything else did. Thanks for watching Barely Evolved. And remember, you are the miracle your ancestors fought mammoths for. या So hit subscribe before natural selection does its thing. ओके, तो यही था वीडियो। एंड मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोविड, लेट सपोज कि 500 इयर्स अगो या 1000 और 2000 इयर्स पहले आता, तो अभी जितनी डेथ्स, आई मीन डेथ्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा होगी बिकॉज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी हमारी। उस टाइम पे कम थी ऑब्वियसली। और मैंने कहीं पे सुना था कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है हमारे लाइक कितने 200 इयर्स और 2000 इयर्स पहले उतनी नहीं थी। कुछ सालों, अगर कुछ सेंचुरीज पहले जाए तो उतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी जितनी अभी है। अभी काफी पॉपुलेशन, काफी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, R&D एंड एवरीथिंग। हम काफी चीजें कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड एवरीथिंग। एंड दैट्स इट, यही वीडियो था। एंड ठीक है, लेट्स ओके, दैट्स इट, बाय बाय।